हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास गेस्ट पेपर 2024। स्टूडेंट ये आपके लिए नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं। स्टूडेंट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया तो नीचे दी गई रेड के सब्सक्राइब बटन को जरूर कर दें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा शॉर्ट। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, डिफाइन वैलेंसी विद एन एग्जाम्पल, write down two property of positive rays, differentiate between shell and subshell, define isotopes with an example, define Mendeleev periodic law, differentiate between period and groups, define shielding effects, define organic chemistry, what is mole, what do you mean by the carbon dating, what is isotope of chlorine, define Avogadro number, what is difference between the Mendeleev periodic law and modern periodic law, define electron affinity, what is trend of atomic radius in period and groups, define organic chemistry and inorganic chemistry, differentiate between atomic number and mass number, define molecule ion and give two examples, state the defect of Rutherford atomic model, what is the atomic number of phosphorus, write down its electronic configurations, define electronic configurations, state Mendeleev periodic law, define nuclear chemistry, what is the mean by mole, define isotopes, give example, write name of two element which are produced in U-235 fusion reactions, define electronic configuration, state Newland octave law, write name of any four element of or symbols of 17 group of the periodic table law, define shading effects। स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। Briefly describe the ionic compound, differentiate between polar and non-polar covalent bond, why does ice float on water, write two property of the covalent compound, what do you mean by the standard atmospheric pressure, define vapor pressures, distinguish between amorphous solid and crystalline solid, what is mean by the transition temperature, write two property of the covalent compound, ionic compound or solid explain, define non-polar or covalent bond and give an example, define hydrogen bonding and give an example, whether the density of gas increases on cooling and explain, define diffusion and give an example, define single covalent bond, how coordinate covalent bond is formed, define lone pair, define pressure, define crystalline solid, define Boyle law, what is diffusion, what are solid grade, which type of covalent bond is formed in nitrogen gas, define metallic bond, define double covalent bond and triple covalent bond, differentiate between the lone pair and bond pair of electrons, write two property of liquid state of matter, write name of factor, effect evaporations, what why are gases compressible, define boiling point। स्टूडेंट ये नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। इंशाल्लाह इसमें भी 2 से 3 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में, लिहाजा आप इसे जरूर तैयार करें। नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए आपके लिए।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 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 पूरी बुक में से लिए गए हैं। स्टूडेंट आप इसे जरूर तैयार करें और जल्द से जल्द तैयार करें। स्टूडेंट न्यू हैं, जो इस चैनल पे न्यू आए हैं, नीचे दिए गए रेड रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट आपको कौन सा गेस्ट पेपर चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। अगर हम आपकी वीडियो हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोलूट एंड सॉल्वेंट? हाउ वन मोलर solution is prepared? What is difference between node and cathode? What are non-electrolytes? Give an example. What is redox reactions? Write an two chemicals property of halogens. Write the name or symbols of any four element of noble gases. Write an two uses of the sodium. Write two difference between the colloid and suspensions. Well, what are electrolytes? What is galvanic cell? Write down any two use of non-metals. What is meant by the reducing agent? On which factor does ionization energy depends? Write any two use of silver. What is Tyndall effects? Define electroplatings. What is meant by the corrosion of a iron? Define galvanizing. Define coating. Tin coating. Write down name of any noble metals. Define electropositivity. Define redox reactions. What is alloy? How is molar solutions prepared? Differentiate between the oxidation, oxidizing and reducing agent. What is galvanizing done? Define electropositivity. Write two uses of the sodium metal. Write two difference between alkali metals and alkaline earth metals. स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 के जानिब, जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए। स्टूडेंट ये क्वेश्चंस सेक्शन वाइज आएगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 के सेक्शन ए और बी आपको दोनों हल करने होंगे। कोई से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 2 हल करने हैं। डिफाइन एनी 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। गिव कंपैरिजन बिटवीन द सॉल्यूशन एंड कोलाइड। एक्सप्लेन मेजर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। Explain how it is affected by the difference factors. Give 5 result of Rutherford atomic model. Write the 4 property of the cathode rays. स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं सारे। राइट नोट्स ऑन द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड। Explain the factor which affect the diffusion of liquid. Differentiate between the suspension and colloid. Provide the list of the rules and assigning oxidation number to different element. State 5 step of writing a chemical formula. Write 4 uses of isotopes. Define covalent bond. Explain the single, triple, double, and triple covalent bond with an example. Define colloid. Give its 4 characteristics. Write 5 difference between compound and mixtures. Explain the boiling point with the factor which affect it. Describe the working of an electrolyte cells. स्टूडेंट ये थे आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस जो नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। आपको कोई गेस्ट पेपर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, हम इंशाल्लाह आपसे आपको 2 से 3 दिनों में अब बना कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।